मोदी जी अक्सर कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र का त्यौहार, लोकतंत्र के त्यौहार के बारे में अक्सर बात करते हैं। और आज अपने शासनकाल की 12वीं वर्षगांठ पे उन्होंने एक भारत के निवासियों को एक तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडाइज्ड सिलेंडर मिलते थे, हालांकि उनका रेट तो लगातार बढ़ता रहा है, आज उन्होंने घोषणा की कि 9 से 4 तक काटा जाएगा। अब लोग अपने चूल्हे जलाना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। ये मैं मानता हूं कि ये 12 साल का जो उनका रिकॉर्ड है उसका एक प्रतीक है। झूठे वादे, धोखे जिनके बारे में विस्तार से प्रेजेंटेशन में राजीव जी ने अभी आपको दिखाया, मैं फिर से आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। पहला दावा था कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। 2024 तक $5 ट्रिलियन का जीडीपी भारत में होगा। ये उनका 2019 में दावा था और हकीकत 4 ट्रिलियन से भी कम है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बजाय छठी बड़ी अर्थव्यवस्था आज वर्तमान में भारत है और लगातार जो रैंक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। और एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, एक बड़ा कारण है रुपए की तेजी से गिरना। अब 97 तक तो 97 पार हो चुका है, 100 पास आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने कहा था कि 100 इज जस्ट अ नंबर, तो फिर 110 इज ऑल्सो जस्ट अ नंबर, 120 इज जस्ट अ नंबर, 150। तो ये कब तक गिरता रहेगा और सिर्फ नंबर रहेगा? इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। महंगाई बढ़ती है, तेल का रेट बढ़ता है, जो भी इंपोर्ट्स होते हैं उनका रेट बढ़ता रहता है। तो इससे बहुत भारी एक गहरी संकट हमारी अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा है। एक और बात मैं आपको के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात होती है, कुछ दिन पहले 7.7 का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया था। जो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार, पूर्व सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम खुद ने कहा है कि जब यूपीए के समय जब जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था, सच्चाई से 1.5 कम दिख रहा था और मोदी सरकार के शासनकाल में 1.5-2% ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप सीधी बात समझ सकते हैं कि एक तरफ वो जीडीपी का रेट आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं और लेकिन फिर भी हमारा जो जीडीपी टारगेट है वो मिस होते जा रहा है। तो आप बताइए, ये निकम्मापन जो है इससे साफ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, 2.1 लाख करोड़ रुपए भारत छोड़ के चले गए हैं। आपको याद है कि जो वित्त मंत्री खुद ने कहा है कि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और पूछते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन ईडी सीबीआई के रेड्स होते हैं। अब पहले वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब वो खुद दुबई, लंदन, सिंगापुर चले गए हैं और अब अपना पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये है हमारी मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की नीतियों का इम्पैक्ट। अगले स्लाइड पे आते हैं। तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो निकल के बच रहे हैं, आम जनता का क्या हो रहा है? तो दूसरा जो वादा था मोदी सरकार का, महंगाई से राहत, और सच्चाई आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एलपीजी का रेट 2014 और अब के बीच एलपीजी का रेट 123% बढ़ा है, पेट्रोल का 44% बढ़ा है, डीजल का 73% बढ़ा है, दूध का 71% बढ़ा है और दाल का 84% बढ़ा है। तो ये है रिकॉर्ड मोदी सरकार की महंगाई के राहत का। एक और उन्होंने बात की थी, क्योंकि महंगाई की बात तो हो गई, अब रोजगार पे आते हैं, कि भारत को विश्व में एक रोजगार का केंद्र बना देंगे। अब ये तो हंसने वाली बात आज लग रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा था और उनकी डिलीवरी क्या रही? 10 में से 4 युवा बेरोजगार हैं, 18.4 शहरी युवा बेरोजगार हैं, और इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश का युवा जानता है कि सच्चाई क्या है। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। MSMEs यानी सूक्ष्म लघु मध्यम
उद्योग। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल 40,000 MSMEs बंद हुए। उनको दरवाज़ा बंद करना पड़ा, उनके सारे वर्कर्स जो भी थे उनको छोड़ना पड़ा। और 3 साल पहले 6,222 थी ये संख्या, अब 40,000 MSMEs बंद हो चुके हैं। उन्होंने अनेक घोषणाएं की थी, उन्होंने कहा था मुद्रा योजना, फलानी योजना, बहुत चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, दावा हुआ था, और हकीकत है कि 40,000 MSMEs बंद हुए पिछले साल। और जो 99% जब अर्थव्यवस्था में प्रगति तभी होती है जब छोटे जो बिजनेसेस हैं वो बड़े हो जाते हैं, जैसे कहते हैं स्केल अप हो जाना। और 99% जो MSMEs हैं वो छोटे के छोटे रहते हैं, ना उनको पैसा मिलता है, ना उनको ट्रेनिंग मिलती है, ना उनको सपोर्ट मिलता है, तो इसी कारण वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और ये है 12 साल के बाद मोदी सरकार का रिकॉर्ड। फिर उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर के बारे में, आप सबको याद है, किसान की आय दुगनी करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 1.9 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, यानी हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? अगर उनकी आय बढ़ रही है, अगर उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, तो ये क्या देखने को मिलता? बिल्कुल नहीं। तो ये एक और धोखा कि भारत के किसानों पे किया गया है, जिसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। फिर पहुंचते हैं विश्व गुरु। भारत को विश्व गुरु के स्तर पर लिया जाएगा जैसे प्राचीन काल में था। अब मोहन भागवत जी भी नहीं मानते कि भारत विश्व गुरु है, ये तो साबित हो चुका है। भारत जो अभी ईरान, US और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें भारत का क्या लेवल है वो साफ दिखा। बिना सोचे समझे मोदी जी इजराइल गए थे लड़ाई के 2 दिन पहले। जब युद्ध शुरू हो गया, पाकिस्तान बीच में घुस गया, भारत का नामो निशान नहीं था। जो उनके अलग अलग मित्र हैं जिनसे पप्पी झप्पी की है कई सालों से, उन्होंने इनसे कुछ सलाह नहीं ली। और जब युद्ध हो रहा था, मोदी जी ने क्या किया? शांत रहे, चुनाव प्रचार में रहे, प्रचार प्रसार हो रहा था, कुछ नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उन्होंने क्या कहा? 1 साल सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो, घर से काम करो, खाद बचाओ, और देश के बाहर मत, छुट्टी के लिए मत घूमो। और फौरन अगले दिन जहाज में बैठे और उनकी अपनी आयावारी शुरू हो गई। 500 करोड़ का खर्च हुआ है उनके फॉरेन ट्रिप्स पे 2021 और 25 के बीच। इसे ये कहते हैं ऑस्टेरिटी। तो ये उनके फॉरेन पॉलिसी की यही हालत है। अब जो ये युद्ध हुआ और हॉर्मुज़ का स्ट्रेट अभी भी बंद है जैसे आपको पता है, तो ना LNG आ रहा है, ना LPG आ रहा है, ना कोई पेट्रोलियम आ रहा है। और इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे? तो पहले उन्होंने अगले स्लाइड पे आते हैं, उन्हें कहा था कि भारत खाद के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला है। और सच्चाई ये है कि जो LNG है जिससे खाद यूरिया बनता है भारत में, क्योंकि भारत में यूरिया का उत्पादन होता है, वो 25% कम हो चुका है। और जो गैस की कमी के कारण जो 25 लाख टन्स यूरिया का उत्पादन होता था, मार्च में 15 लाख तक घट गया है। तो इसका सीधा असर हमारे किसानों पे पड़ने वाला है और आने वाले महीनों में आप ये देख सकते हैं। तो एक तरफ सप्लाई कम हो रहा है, एक तरफ रेट बढ़ रहा है, तो इसका हर एक देख सकता है कि इसका क्या होने वाला है। फिर आते हैं शिक्षा पे। अब मोदी सरकार ने कहा था कि शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा 21वीं शताब्दी के लिए। और सच्चाई क्या है? पेपर लीक पे पेपर लीक, चाहे नीट हो, CBSE का तो आपने देखा ही है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, टेंडरिंग पे घपला है जो कि CBSE के टेंडरिंग में था। तो ये सब, अब इससे ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है? 89 पेपर लीक्स, 48 री एग्जामिनेशंस पिछले 10 साल में। तो हमारी मांग है और पूरे विपक्ष की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी फौरन इस्तीफा दें, क्योंकि जिस प्रकार देश के युवा के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जिस प्रकार 21st सेंचुरी की जगह हम 19th सेंचुरी में जा रहे हैं, जहाँ
शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, ये जिम्मेदारी सीधे उन पे पड़ती है। वैसे मोदी जी पे भी पड़ती है, लेकिन कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब और क्या कहा था मोदी जी ने, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे है, और सच्चाई क्या है ये भी हम जानते हैं। अब 2000, आपको याद है 2024 में बाल बाल बचे, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, यूपी में बुरी तरह हारे। तो फिर क्या हुआ, कुछ ही महीने बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में अचानक जो राज्य का चुनाव था वहां जीत गए। ये अचानक कैसे हुआ, वोट चोरी। ये राहुल जी और हमारी कांग्रेस पार्टी ने साफ दिखाया है कि कहां से फर्जी वोट इकट्ठे हुए, कहां फर्जी वोट डाले गए और इसका क्या नतीजा था। तो फिर वोट चोरी पे पकड़े गए, तो अब क्या करें, पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, अपने जो पसंद के लोग हैं उनको वहां रख दिया, और शुरू हो गया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। वेस्ट बंगाल में 91 लाख वोटर काटे गए, बिहार में 47 लाख वोटर काटे गए। बंगाल में तो नए कैटेगरीज, जो भी वोटर पास हो रहा था उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मोदी जी को जिताना है। तो अभी एक नया तरीका, पहले अनऑफिशियली कर रहे थे वोट चोरी के माध्यम से, अब ऑफिशियली कर रहे हैं चुनाव उद्योग के साथ। तो ये इस प्रकार उन्हें प्रचंड जीत मिल रही है चुनावों में, जहां 2024 में बुरी तरह हारे थे। ये पूरी देश की जनता को साफ दिख रहा है। अब आते हैं मणिपुर पे। कितने साल से, 3 साल से वहां पे हिंसा चल रही है। 2060 से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई, 60,000 निवासी, दोनों अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके अब अपने बेघर हैं, घर से भागना पड़ा, और इसके बारे में मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। मोदी जी एक बार गए, एक दिन से कम बिताया, किसी चीज़ के उद्घाटन के लिए गए, किसी से मिले नहीं, बातचीत नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये है सच्चाई हमारे जो हम नॉर्थ ईस्ट में, वो नॉर्थ ईस्ट की अक्सर बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मेरे दिल में उसके लिए जगह है, लेकिन जब मतलब की बात होती है तो गायब हो जाते हैं। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बहुत बातचीत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि जो शहर में जो चाहे दिल्ली हो, अब मुंबई भी, अलग अलग शहरों में जो निवासी हैं वो गर्मी से और प्रदूषण से और कचरे से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं। हर जगह आप देख सकते हो गर्मी की समस्या। राजीव जी ने बताई कि आपने कुछ ही दिन पहले वो हीट मैप देखा होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़रा जो लाल इलाका था, जो दिख रहा था, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है, वो है भारत। और ये लोग क्या कर रहे हैं, और आप सबको पता है, हर बच्चे को पता है, स्कूल के बच्चे को पता है कि एक कारण, बहुत कारण है इस गर्मी के। एक कारण है कि आप लगातार पेड़ काट रहे हैं, चाहे आप ग्रेट निकोबार में हो या आप इंडिया मेनलैंड में हो या जहाँ भी हो, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। और जहाँ भी, अगर बाहर जो भी तापमान हो, अगर आप पेड़ के पास खड़े हैं तो ठंडा महसूस होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियाँ क्या हैं, पेड़ काटो पैसा बना। जो स्मार्ट सिटीज़ परियोजना की घोषणा हुई थी, उसके बारे में तो शांत हो गए हैं। 2080 प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए और अभी तक अधूरे रह गए हैं। तो ये तो एक मजाक सा लगता है, कोई भी जो किसी भारत के शहर में रहता है उसको तो मजाक लगता होगा कि यहाँ स्मार्ट सिटी वैसे है कहाँ। और आखिर में मैं रेलवेज़ की बात करना चाहूँ। रेलवेज़ के बारे में भी बहुत प्रचार होता है। रील मिनिस्टर जो हमारे हैं वो तो बहुत वीडियोस भी चलाते हैं, वंदे भारत अक्सर चलाते, कभी कभी स्पीड दोगुनी करके दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जो आम जनता है वो ट्रेनों में मवेशियों की तरह भरी पड़ी है, ट्रेनें लेट चलती हैं और सेफ्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है। 22,413 मौतें हुई हैं NCRB के आंकड़ों के तहत जो रेलवे ट्रैक्स पे। 2024-25 में 31 दुर्घटनाएं, जो महत्वपूर्ण दुर्घटनाएं होती हैं रेल की, वो हुई हैं। और काफ़ी वीडियोस चले हैं डीरेलमेंट्स वगैरह के। जो कवच सिस्टम है, जिसके बारे में भी बहुत वीडियोस चलाए हैं सरकार ने, सिस्टम अच्छा है लेकिन सिर्फ 2% ट्रैक्स पे लागू है। मतलब कि जो 67,700 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं उस पर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट इस प्रकार का नहीं है।
तो ये है मोदी सरकार की सच्चाई। बस आपके सामने हमने कुछ ही आंकड़े पेश किए, कुछ ही बातें रखी हैं। पूरा विस्तार से आप हमारा रिपोर्ट देखिए, उसमें पूरी बात गहराई से आप देख सकते हैं। और मैं प्रोफेसर राजीव गावड़ा और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है और लोगों के सामने रखा है। धन्यवाद। Namaskar. What are today's headlines? What are the headlines that affect the poor people of India? The Modi Sarkar has announced that it is cutting the number of LPG cylinders that will be provided to Ujjwala beneficiaries from 9 to 4. Just 10 years ago, with a lot of fanfare, there was an announcement that the women of India will no longer have to rely on dangerous, harmful methods of cooking, that they will get clean fuel through LPG cylinders. And Prime Minister Modi promised 12 cylinders for every beneficiary of the Ujjwala program. Last year, the 12 was cut to 9. Today, on the 12th, on the second, on the anniversary of his swearing in as Prime Minister for the third time, he has chosen to strike this blow on the women and families of India. What can we say? This is standard behavior. Why? Because when you look at the numerous promises that have been made over the last dozen years, all we have are big announcements, grand statements and headlines, but the sorry reality is that none of those headlines actually translate into anything that is meaningfully transforming the lives of the people. So, what we have for you today is a little bit of an accountability report, an assessment of the promises that have been made over the last 12 years, an assessment of why people have voted for this Sarkar, and then an actual report card which says, this was the promise, this is the actual reality. Now, you will see that we have two documents for you. One is a presentation that you can see the headlines already, the cover page. The second is a detailed document, which is a PDF that you can access through a QR code, and that itself runs to 76 pages. Here, we're going to be kind and restrict to just 12 slides, okay? 12 years, 12 slides, all right? And I'm Professor Rajeev Gowda. I'm the chairman of the AICC Research Department. And accompanying me is Sri Amitabh Dubey, who handles research for the Communications Department. I will do my presentation, the expose, in English, and after I'm done, Amitabhji will share his insights in Hindi. So let's start with the major headline. The prachar is that India is rapidly moving towards becoming the world's third largest economy, right? He used to keep saying it's going to happen day after tomorrow. Now that has been pushed to 2047, maybe pushed to the end of Kali Yuga. But the basic point is, the promise is that we will be a powerful economy globally. Yes, we will get there. We will be happy to get there, but not because of Modi Sarkar, in spite of Modi Sarkar. We were the sixth largest economy just a few months ago, but as a result of the collapse of the rupee against the dollar, under Prime Minister Modi's watch, we essentially are in a situation now where we've slipped from being the fourth largest to the sixth largest economy. Okay, let me correct myself. We were the fourth largest, now we are the sixth largest economy. And that is because of the weakness of the rupee, and that weakness of the rupee is a verdict on Prime Minister Modi's management of India's economy. The dollar is what has got stronger, the rupee has collapsed, and it is, well, Prime Minister Modi is ready to hit a century with, in terms of the rupee-dollar conversion rate. Now, this weakness is a double whammy, because part of it is because
investors are running away from India. They have lost confidence in the Prime Minister's management of India's economy and his teams. And even if we want them to come back, seeing the collapse of the rupee, it makes it much worse for them to be able to recover their investments if the rupee depreciates the way it has been depreciating. Rupee under Prime Minister Modi is the worst performing currency in Asia, and he has on his team economists who make the statement, what happens? What does it matter if it becomes 100 rupees to a dollar? It is just a number. Okay? If this is the case, if this is the attitude of the government, everything is just a number. The number of, I'll show you a slide which says, one farmer dies by suicide every hour, or you will say then, oh, it's just a number. It's not a family being shattered. Okay? So that is the attitude, the callous attitude that really makes my blood boil when I hear somebody from the government talk in that manner. And investors, if this was the fastest growing economy, then why are investors fleeing? Why are they not putting in more money into this growth story? 2.1 lakh crore is the amount of money that has been pulled out of India in the 5 months of this year, of this calendar year. Okay? Last year, it took practically the whole year for that much to go out. Now, it's moving out very, very rapidly, and this is a shame. Now, you also know that the Prime Minister kept talking. Just go back to the previous slide, please. Yeah. This slide is talking about what you and I experience. The price of LPG, the price of petrol, the price of diesel, the price of milk, the price of pulses. Everywhere you will see that the price has, LPG cylinder was 410 per cylinder when the UPA was running the government. And after that, in spite of oil prices dropping dramatically, today the price of a cylinder is 913. It has more than doubled. Now, when you see that things have more than doubled across these basic essential commodities that we need for our daily life, the question that you must ask is, have people's income doubled? If people's income had doubled, then this is not a problem, right? But people's income have stayed stagnant. That means that their real incomes, as we economists call it, have fallen, and as a result, people are cutting down on how much they consume, how much they can eat, how much they can travel. And this is also going to fuel inflation, which makes overall prices in the economy much worse. Next, this is about India. The Prachar, we will transform Bharat into a global center for employment generation. Well, unfortunate reality, 4 out of 10 graduates remain unemployed. The more you study, the worse your chances are in terms of getting hold of a job. Urban youth employment. We're sitting in the capital city of India, New Delhi. 18.4% is the urban youth unemployment rate. That means 1 out of 5 urban youth is unemployed and is not able to get a regular job. They may be getting employed in the gig economy and things like that. Only 7% of unemployed graduates will secure a permanent salaried job within a year. Okay? So basically, after studying and trying so hard, families investing their savings, borrowing and sacrificing, you end up with this situation where there is no benefit from that education. This is a tragedy. That whole demographic dividend that we were waiting for is evaporating in front of our eyes, vanishing in front of our eyes, presaging a demographic disaster thanks to the incompetence of the Modi Sarkar. And when you look further, when it comes to jobs, we were ranked 108th in terms of what is called the global gender gap, right? How many women are in the workforce compared to men. Well, now we have become 131st in the world. So we are failing 1/2 of our population by not creating opportunities for our women
to enter the workforce. Next. We keep hearing that micro, small, medium enterprises, these are the backbone of the Indian economy. These are the job creators of the Indian economy. And that they will be doing very well thanks to the various schemes of the government, mudra, things like that. Unfortunately, we've had, just in the last financial year, 40,000 MSMEs shutting shop. Okay. And this is just last year. If you start looking at when the real tragedy hit the MSME sector and why the economy has been on a downtrend since then, you have to go back to that famous announcement on November 8th, 2016. Right? Mitro, remember the demonetization. The damage from the demonetization continues, and MSME sector continues to bear the brunt and is on the verge of collapse thanks to the mismanagement of the Modi Sarkar. And this safety valve for the country, the driving force of new jobs, is in deep trouble. Next. You remember in 2017, the Prime Minister said he will double farmers' incomes by 2022. It is 2026 today. And farmers are not seeing anything close to a doubling of their income. In fact, they're in a worse situation than they ever were. We have, in the last decade, under Prime Minister Modi, more than 1 lakh agriculture-linked suicides. That means that every hour, one farmer or farm laborer dies by suicide. Is that because their incomes doubled? Or is this just a number to this government that does not matter? That is the question you need to ask. It is a real shame that the burden of farm debt is now 33.5 lakh crores, 33.5 billion rupees. Moving on, you're aware that the Prime Minister enjoys foreign travel. That is because he's the Vishwa Guru. He goes on his glorious tours, hugging people and foreign leaders and imparting India's wisdom. Unfortunately, what you have is a reality where nobody seems to care for India as Vishwa Guru. Possibly, all these foreign trips are nothing more than business development trips for his favorite industrialist. That's another story. You can check it out. But basically, if you think about what has happened, right? All those, Trump Sarkar statements, hugging Prime Minister Dolan, all that, President Dolan, all that has essentially resulted in India being targeted with enormous tariffs, India being dictated to. What happens to our sovereignty? What happens to our independence? What happened to our historic relationship with Iran? We slowly, because the Prime Minister did not want to offend the United States, we slowly walked away from Iranian oil. We slowly walked away from our strategic investment in the Chahabahar port. And now, when the Prime Minister wants to secure oil for us from Russia, he has to seek permission from the United States of America. And that is what India has been reduced to. When it comes to protecting our borders, nobody has entered into our borders. Koi ghusa nahi hai, as he said. What is the reality? How are Indian people being treated in other countries? Shackled and deported. Okay, that is the end result of all this, melody diplomacy. What else? The lack of preparedness. During the UPA time, we launched this whole program to increase the strategic reserve of petroleum products. However, in the last 10 years, those reserves were not filled up. They were not expanded. We did not prepare. When I say we, Modi Sarkar and the government of India did not prepare
for a potential situation where we would face shortages of oil, petroleum, natural gas, etc. As a result, when the Strait of Hormuz becomes the choke point and 90% of some of our supplies come from there, we are in a situation where we're not able to produce enough urea, we're not able to provide fertilizers to our farmers, and as a result, the farmers get hit doubly. The prices go up, the supply goes down. What will happen to our agricultural security? What will happen to farmers' incomes? These are all questions that you must ask. Then, of course, the prachar next is about India, about strengthening democracy. Well, we are going through one of the roughest periods in Indian history when it comes to Indian democracy. When the Election Commission, which is now appointed by purely a majority of government appointees, not necessarily giving the leader of the opposition a real say, by changing the Chief Justice and putting in a cabinet minister in that selection committee, you now have people running the Election Commission who, instead of seeing their responsibility as ensuring that every Indian can vote, they see their responsibility as harassing every Indian and making sure that they can exclude as many people as they want. This is a tragedy for Indian democracy. We have seen lakhs and crores of people essentially being deleted of voters, and you also have institutions that are supposed to safeguard our voters who say, what does it matter? They will vote, they'll miss one election, it doesn't matter. No, it matters. Because every single citizen has that right to vote, has a right to make a decision on who to select as their leader to run the government. And when you have 47 lakh people, 59% are women in Bihar, deleted because of the demand for various kinds of records, which none of them are able to produce easily. You've seen 91 lakh deleted in West Bengal, 6.5 crores deleted across the country, hate speech being ignored. Essentially, we have a situation where our democracy is deeply flawed. And this is a real tragedy for every citizen of India. And then, of course, what has been capturing people's attention? We are parents. We're concerned about our children and their futures. And we put in a lot of effort to educate them. And when it comes to examinations, we really give whatever we can in terms of support to ensure that our children are able to do well, because these examinations are a matter of doing well or not doing well in life. And what do we see? We saw that in the NEET, we had a NEET exam leakage. This is not one leakage that took place, one leak of exam paper. Leaks have been going on now. 89 paper leaks, 48 re-exams during the last 10 years of Modi Sarkar. If you can't run it, why are you in this business? Let's figure out some other way. But instead, you're compromising the future of our children. And this is something that we cannot stand, and that is why in every corner of India, the demand is Mantri Pradhan must resign. We need the education minister to go, we need heads to roll from the top. And for our young children who are graduating from school, what happened to the CBSE? You saw that certain favoritism towards certain companies resulted in a situation where, where it took bright youngsters to investigate and show the flaws in how the government administers the CBSE, in how it had gone ahead and given contracts to companies that were incompetent and should have been blacklisted. And then, of course, there is the prachar that peace and harmony are returning across the country. Modi Sarkar, the BJP's hold may be by hook or crook expanding, but when you think about peace, that is not happening. The Prime Minister
for many years had forgotten that India had a state called Manipur. It took him a couple of years of Manipur burning, of ethnic clashes, of people not being able to go back to their homes, of communal violence. After all that, finally he remembered that there is a state called Manipur, and he went there to inaugurate some infrastructure program. But has peace returned to Manipur? Has the harmony that existed returned to the northeast? No. Unfortunately, that is not the case. And more than 60,000 people have been displaced from their homes. More than 260 people have been killed in Manipur, and violence is not ending. Next. Well, in the very first speech of Independence Day speech, I think, if I recall right, the Prime Minister talked about creating smart cities. And the smart cities were supposed to, there were 280 projects, which were, the deadline was 2023. But 280 plus of these projects have still not been completed. Their cost estimates have gone up. There's nothing smart about them. And the end result is the urban transformation that we urgently require has just not happened. Instead, what we have is a pollution crisis. In winter, all of you who live and work in Delhi, for example, really have to put on your masks, and otherwise your life is going to be shortened. If you were to raise this question to the Union Environment Minister, what would he say? He would reply that, oh, there's no connection between health and air pollution. Please go ask the medical experts. They will show you how many lakh people's lives have been shortened as a result of that same air pollution. And what has the government done? Or its chief minister in this city done? Those are the questions that you need to ask. And right now, we're experiencing mega heat stress. A map of India, if you were to look at a temperature map, it is blazing red. And that is a matter of grave concern, because the human body cannot tolerate temperature, what's called a wet bulb temperature, above a certain point. And we are practically there. The demand on our electricity grid to cool people, those who are lucky enough to have fans and ACs, is already maxed out. And the worker, the gig worker, the person who works outdoors, you're going to see a lot more heat-related deaths. We saw this. We saw this when people were on election duty 2 years ago, right? So it's not something, we can say we're strong people, we can deal with the heat, usme kya? But that's not the case. The body cannot deal with it. And why then is the government not doing enough to deal with cooling the country? And the last point out of hundreds of points that we have for you in the detailed document, is about going by train around the country. What is every train traveler's biggest concern? Whether they will reach safely. Why? Because we've had 22,400 lives lost on railway tracks and premises. That's as per NCRB data. What about safety measures? There is a new technology called Kavach. How much of India's railway tracks are covered by Kavach? 2%. So, there have been, just in the last year, there have been 31 consequential train accidents, 2024-25. Does the minister care? Well, he cares enough to go and take some reels and move on, waiting for the next opportunity to take reels of the next train accident. No fixing, no fixing of accountability either. And there's this great scheme called Amrit Bharat Station Scheme. Only 172 out of 1337 stations have been completed. So basically, what we have is just a long record of failure. When you think about some of the wonderful programs that the UPA had brought in, like Manrega, they have shattered that program and brought in this new VB Ramji. And the basic thing is, what was a guaranteed support, income support
for the poorest of the poor at their time of distress has now been taken away. That is the essence of Modi Sarkar. Callous people's death and their hardship, these are just numbers. The government doesn't care. It is continuing its prachar. If you want a detailed expose, there is going to be this particular QR code that's there on the screen as well, and it will lead you to a 76-page document. Can we switch to that for a second, please? Which covers each of these issues in much more depth. It covers each of these issues with references. That is how the research department operates. If we make a claim that this is the number of deaths or something like that, you will see that there will be, where did we get that information from? You will see a reference, a link that shows you. You can see that in, next page please, you can see, this is 76 pages. At the bottom you can see the references, right? Okay? And this is also not, these are all again headlines only. We have not written essays. If you want to write the detailed story of Modi Sarkar, you will have to have multiple volumes of, for failure in this sector, failure in that sector. If you all want that, we will work on it and we can have a literary festival devoted to Modi Sarkar's failures in different sectors. Thank you.